Now we have Shri Anindya Gangopadhyay, Branch Manager of State Bank of India, Alambagar Branch. Sir, Shida. And so, with the permission of the chair and blessings of the chair, we will start the next technical session of this seminar. I would request Professor Aishwarya Vishwas, ma'am, to present her paper. She happens to be a very good friend. Chair, she will be chairing the this session. First, we will have. First, we will have Srimati Anamika Pandey Mishra. let her join. Yes, let her join. From Manchester. No, sorry. Manchester, England. Manchester, England. Welcome, as we all are trying to get perspectives on this seminar from every point of view, it's important to learn the lawyer's point of view, as law is something that enforces the rules and regulations that are required the rules and regulations that are required to save the environment. On this aspect, I will welcome Srimati Anamika Pandey Mishra ma'am, who is a lawyer, and she was a lawyer in Singapore first. Now she's a barrister and solicitor in Manchester, England. She has given this seminar truly an international name. Thank you, ma'am, for joining us. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, it was a mute. I got it. Yeah. Thank you very much. That was a very, very warm welcome. As you already know, and as I've been introduced, I do practice as a solicitor in England. And I'm also actually qualified in India and worked there for several years before moving on to different countries. And as you all know, we'll be talking about environmental law today. And in the recent years, this subject has come to be of a particular relevance, as the impact of environmental degradation can now be felt at every level in our everyday life. Now, in this session, we will basically be covering 5 small subtopics just to get an overview of the laws, the problems that entailed by the legislatures. So we'll start briefly by talking about what are environmental laws and why are they important. Then we'll move on quickly to a brief history of environmental laws internationally as well as in India. And then we'll talk about issues which the lawmakers encounter while drafting these legislations, different forms of environmental laws, and then the legal protections which are presently there in India for counteracting these problems. So starting with the very main subtopic, what are these environmental laws and why are they important? Simply stated, environmental law and principles are enacted and enforced by local, national, international governments to regulate human treatment of the non-human world. It's as simple as that. So sidelining environmental matters has current and future effects, as we all know, and would mean a deteriorated quality of life for the current inhabitants of this world, as well as non-preservation of the world in its current form for the future generations. Now, you would imagine that given the impact of pollution on our day-to-day life, everyone on their own would make sure that nothing is done that impacts the environment negatively. However, we are unfortunate creatures of habit and comfort. For instance, I'm sure each one of us are guilty of littering at some point in our lives, isn't it? I have done it multiple times, and so I'm sure all of us have. Now, there's often a conflict in the economic interest of the countries and individuals and industries and environment on the other hand. And that is why it is really important to address these environmental problems typically. And that is also why it is important that there are laws and there's strict laws to help dictate our actions.
because when it comes to money, human minds tend to be, just go for it. Moving on to the brief history. Now, internationally, throughout, there have been occasionally laws passed at different countries. For instance, as early as 80 AD, which is before Christ, Senate of Rome passed legislation to protect the city's supply of clean water. Then came the Industrial Revolution, and that saw the establishment of various factories, and then came greater exploitation of the natural resources. And certain laws at that point were passed as well. We fast forward to World War II, and there was this rapid reindustrialization, the rebuilding of different countries, especially Japan, which was accompanied by release of various industrial chemicals into the human food chain, forcing the government to consider comprehensive pollution control policies. However, the big change internationally came in the year 1972, so it's not that far long back if you see, just 1972, with the Stockholm Conference of the United Nations, which actually saw the establishment of the United Nations Environment Programme as the world's principal international environmental organization. Until the Stockholm Conference, European countries generally had been very slow to enact legal standards for environmental protection, and not just Europe, I think most of the world for that matter. Let's touch upon what was happening in India during this time and even during the prehistoric times. Now, in India, we take great pride in saying that environmental protection is an age-old idea which has been imbibed in the Indian cultural ethos since time immemorial. Environmental awareness can be said to have existed during pre-Vedic Indian valley civilization. Harappa, Mohenjo-daro gives certain evidence of this fact. Then the protection and cleaning of the environment were the essence of Vedic culture as well. Chakra Samhita, for instance, gives many instructions for the use of water for maintaining its purity. Similarly, Arthashastra basically entails various punishments which were prescribed for cutting trees, damaging forests, for killing animals. The environment ethics of nature conservation were not only applicable to the common man, but to the rulers and kings were also bound by them. Fast forward to the present times, the legislative history aimed at protecting environment to maintain ecological balance dates back to the Indian Penal Code, which was basically enacted in 1860. For instance, there's a chapter 14 in the Indian Penal Code, which deals with offenses that are related to safety and public health. These provisions make public health a priority and make any act punishable which pollutes the environment and makes the life of an individual dangerous. Now, these are just like we have so far have understood what is environmental law, the need for them, and the history of environmental law briefly, internationally as well as in India. However, enacting precise environmental laws are not always that simple. In the next section, we'll go through the various issues that are encountered by the legislatures for enacting these environmental laws. And broadly, there are two main issues here. The first one being the transboundary effect of environmental pollution. We all know if a pollution occurs in one particular jurisdiction, it is not really restricted to that particular country or that particular jurisdiction. For instance, I'm sure all of you must have heard about the Chernobyl explosion, which happened in the extant USSR. The effects of that explosions were felt many years later in countries such as Austria as well. Or for instance, if there's an oil spillage in the sea, it cannot really be restricted by national boundaries. And the effect is felt by all neighboring nations, irrespective of whose waters or whose ship the spillage actually happened. Another problem is that there's often conflicting data about the environmental impact of human activities. Scientific uncertainty often has complicated the drafting and implementation of environmental laws and regulations, particularly for international conferences which are trying to set up universal standards. So, for instance, it is impossible to determine precisely what effects the activity will have on the quality of the environment or on human health. For, again, instance, it is generally impossible to know whether a certain level of air pollution will result in an increase in the mortality from respiratory diseases and how much that mortality would be, or whether a certain level of water pollution will reduce a healthy fish population in the neighboring water bodies.
or whether oil development in an environmentally sensitive area will significantly develop the native wildlife. Consequently, these laws and regulations usually are designed to be be flexible enough to accommodate changes in the scientific understanding and technological capacity, so that as and when we kind of understand what new factors and what new effects are taking place, we can amend and apply them to the existing laws. So, to give you an example, there was a Vienna Convention on Protection of Ozone Layer, which actually came into effect in the year 1985. It did not really specify the measures that each signatory state had to adopt to protect human health. And it also did not mention any of the substances that were thought to damage the ozone layer for that matter. Because for all you know, CFC was identified as one of the objects. And then a few years down the line, there could have been another discovery and another scientific data to substantiate some other object to it. So the laws have to be modified in such a way that it keeps up with the scientific approach on it. I just want to briefly touch on the various types of environmental law and the principles that they are based upon. So they're broadly defined into various forms, and then these forms are based upon certain principles. And these depend upon the specification and the level of control that these laws entail, actually. We'll go through the various forms of the legislation, and then we'll discuss the principles. When it comes to forms, there are just 4 forms: the command and control, environment assessment, economic incentives, and set-aside schemes. The command and control legislation are the most specific sorts. They actually tell you this is the problem, this is the solution, and this is the punishment. So they involve the identification of a type of environmentally harmful activity, the imposition of specific conditions or standards on that activity, and the prohibition of the form of activity that fail to comply with imposed condition or standard. The next form of environmental law is basically environment assessment mandates. So here you're not really sure if a particular action can lead to something which is really bad for the environment. So it talks about various assessment at different levels. So they identify the level of potential environment impact, and they contemplate an action in case the impact is major. The establishment of specific goals for the assessment, like how do you carry out these assessments? And then the setting of requirements to ensure that the assessment will be considered in determining whether to proceed with the action as originally contemplated or to pursue an alternative action. There are various economic incentives, which entails the use of economic instruments, for example, pollution taxes, to create incentives for environmental protection. And then there are set-aside schemes, which is the final method of environmental protection. And it basically sets aside certain lands and waters in their natural state. For example, we have national parks in India. So they set it aside, you do not disturb it so that the environment is protected, the ecological balance is maintained in those areas. Now we move on to the various principles these various laws are based upon. We talked about the forms, now we're talking about the principles. Yeah. There are 5 in category. The first one is the precautionary principle. As the name suggests, you are being precautious over certain things. So the precautionary principle requires that if there's a strong suspicion that a certain activity may have environmentally harmful effect, it is better to control that activity now rather than wait for the damage to happen and then act upon it. The next principle is the prevention principle. Again, as the name suggests, you prevent the damage from happening. So this entails the prevention of environmental catastrophes. Preventing environmental harm is cheaper, easier, less environmentally dangerous than actually reacting to environmental harm that already has happened. The third one is the polluter pays principle. Again, as the name suggests, they make the polluter pay for the pollution that has actually happened because of the fault of the polluter. And such measures basically encourage the producers of pollution to make cleaner products or to use cleaner technologies. The fourth one is the integration principle, and that basically entails the idea that each and every action that the government or the industrialists take
The environment should be at the core of it. So the environmental protection requires that due consideration be given to the potential consequences of environmentally fateful decisions. Now, various jurisdictions have therefore integrated environmental consideration into the decision-making process through the legislature, and environment impact assessment mandates and other provisions as well. The last one is the public participation principle, where they actively seek out what the public wants to do with it. So this entails how public opinion influences environmentally sensitive decisions by formally integrating the views of the public by either written comments or through hearings. And in many countries, like in India, we have public interest litigation. Lawsuits have become an important component of environmental decision making. So anybody who thinks that the environment is being sacrificed for, say, a dam getting built up, they can actually file a public interest litigation on this effect. We'll talk about various laws that are there in place in India, about how to proceed upon it in the next section shortly. So the legal protection, which is there under the Indian legal system. Interesting fact, the Indian Constitution, when it was adopted in 1950, did not really deal with the subject of environment at all, which is quite funny because all this while, from prehistoric times, Vedic times, we have had so many laws and we have had so many contexts about environment. And now when we finally enact the Constitution 1950, there was nothing, absolutely no mention of environment at all. However, over time, different articles under the Constitution has been construed to mean that it entails environment into it. And then finally, we talked about Stockholm Declaration earlier on in 1972. That was a wake-up call even for India. And since then, there has been a number of laws that have been enacted. Now, at present, there is a host of legislation in India aimed at protecting the environment from pollution and maintaining the ecological balance. The Environment Protection Act, which was enacted in 1986, is one major act for environmental protection. And then apart from this, the government of India has launched various programs as well and made use of audio-visual media to educate the people and arouse their consciousness for the protection of the environment. The acts are actually not just limited to that. There's a host of other acts. For instance, the Wildlife Protection Act, Water Prevention and Control, Forest Conservation, Noise Pollution, and I can just go on and on. There are more than about 20 such acts which deals with various aspects of it. Over time, the existing legal system, we just talked about the Constitution, how it had nothing in 1950 and how later on it was construed that different articles in the Constitutions actually comprises of the environmental effects on it. So over time, the existing legal system has been inferred to entail various environmental protection. For instance, the preamble of the Indian Constitution begins by stating that the people of India solemnly resolve to constitute India into a socialist country. Now, thus aiming at dealing with solving social problems at first rather than individual problems. Now, one of the basic aims of the preamble being socialism, it is the responsibility of the state to fulfill this by taking stringent measures to make the environment free from all sorts of pollution, because socially, that is what is important, isn't it? Now, as I mentioned, there's no specific mention of the environment, but different articles can be construed to imbibe these ethos into them. Now, going on further, the Constitution of India under Part 3 guarantees fundamental rights. Article 21, Article 14, and Article 19, I'll briefly touch upon these, of this part has been used for environmental protection. For instance, Article 21 states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Now, therefore, Article 21 guarantees fundamental right to life, and therefore the right to environment free of danger of disease and infection is inherent in it. So again, this is a construction. We have kind of drawn the meaning of it from Article 21. Now, equality before law and equal protection of law has been granted under Article 14 of the Constitution.
Now, this fundamental right impliedly casts the duty upon the state to be fair while taking actions in regard to environmental protection. Article 19 actually deals with the right of speech and expression and is a fundamental right again under the Constitution. Now, there have been several cases where people have approached the court through the way of speech and expressed themselves by writing letters, whether they have expressed the violation of their right to have a clean and safe environment and the right to livelihood. Public interest litigation is one such mode of going to the court to protect the environment. It's not just limited to the federal government or to the Constitution. We have something called the Directive Principles of the State Policy, which talks about establishing a welfare state. And a healthy environment is also one of the elements of the welfare state. So if the state wants to function properly, they have to see to it that environment is sufficiently protected. Clean water, safe grounds for the children to play, green grass, trees, all of this is important for the welfare of the people. Now, while incorporating the various features to the fundamental right provided in Article 21, which we just discussed, the various principles which we again had discussed earlier, if you remember, the prevention principle and the polluter pays principle, all of that. Now, these principles have actually been ascertained by the Supreme Court of India through various cases over time. But one notably important case is that of MC Mehta versus the Union of India, which is also known as the Taj Mahal case, and I'm sure a lot of you would have already known about it. Now, this was a judgment which was based on the precautionary principle. In this case, a public interest litigation was filed alleging the degradation of Taj Mahal due to environmental pollution. So you know how Taj Mahal is all white and sparkly and beautiful, symbol of love or whatever we say it. It was actually getting corroded because of the industries which were established in and around the Taj trapezium zone. And it was getting corroded, the white marble, because of the use of coal or coke by these industries. The court referred the case to the expert committee once the public interest litigation was filed to seek technical inputs on the matter. And in the finding, it came out that the industries located in the Taj trapezium zone were using coal, coke as industrial fuels and thus emitting effluents. It was held by the court that the Taj, apart from being a cultural heritage, is also an industry by itself. How many tourists actually come there every single day? So it is an industry by itself, and thus it was directed to all the industries that were operating in the Taj trapezium zone to use natural gas and not really coke, coal, or any other form of natural, combustible substance to operate their industries as a substitute. And if it cannot be restored, so if they couldn't use, say natural gas for any reason, they must stop functioning and they may relocate themselves from that area. So all those industries which would not use natural gas were actually moved to a separate separate area and away from the Taj trapezium zone, which is quite interesting. If any of you have recently visited the Taj Mahal, you would have noticed that vehicles which are not CNG vehicles are not allowed within a certain area of the Taj, because of course there's emission coming out of those vehicles which kind of corrode the Taj marble and the way it looks as well. I do not intend to take any more of your time, and I'm going to conclude here because there's enough legal jargon already that we have spoken about. But to sum it all up, it is safe to say that although a lot has been done in the last few decades, there are various environmental issues and there's still a lot that needs to be done. Most importantly, countries struggle with compliance as a lot rests upon morals of the people, right? We should make sure morally that we do not spread pollution, do not pollute the environment. The industrialists should make sure that they treat the industrial waste properly. So a lot depends upon morals. And of course, there are laws to enact them, but these are sometimes very specific, but many a times because
the effect of environmental degradation cannot really be ascertained to the T. They cannot be really perfect laws to curb them. So these are the problems in actually enacting these laws and making these laws effective against it. Now, let's hope that we can get past all of these and are able to leave a better world for our next generation. Perhaps it's the most valuable blessing and an inheritance that we can actually leave for them. Clean air to breathe, clean water to drink, safe food to eat, green lands for a good quality of life. So a lot of money would not really make sense if you don't have enough water to drink or clean food to eat. And here's hoping that various sanctions and awareness that the laws that have been imposed, combined with the public morals and the morals of the industries and the businessmen, which are imposed by by India and the rest of the world, does its job, and we get to that point. That's it. I'm not going to take any more of your time, and I hope that was a bit helpful. An intellectual way of imparting knowledge has clearly enlightened us about the international laws regarding the safety and protection of the environment. Thank you so much, Anamika ma'am. Sir, would you like to? No, the paper was brilliant, and I have all words of appreciation for the efforts that you have taken. The paper was brilliant, and the presentation was brilliant. You have really helped us to recapitulate what is the Article 14 and Article 21, and that the principle of seized policy that you referred to. But the problem with our part of the country is, I mean, I'm not talking of your country where you live. Our part of country is that here dietary principles of the steward policy, except Article 39 B and C, none of the articles takes precedence over the fundamental rights. So it is Yes. only the fundamental right that prevails. So and the violation of environmental laws are not at all punishable in the court of law. You go on violating, you go on disposing your wastage and waste materials here and there's nothing to be done, but you are fortunate to be living in a country where you are told which waste is to be recycled and which waste is to be given in the garbage in what form. So thank you very much. It is an interesting fact actually, uh, because although we are told how to dispose of the waste, the maximum pollution which is created is actually created out of the developed world. And most of the developing countries, including India, face the problem of economic interest versus environmental protection on top. Because you see, India and countries like India are trying to develop at a really fast pace, isn't it? For that, you need industrialization, you need new industries. And if you need new industries, you end up violating the environment because that causes environmental pollution. So it's a roundabout issue which you try and tail bend on one end and then come out of it on the other end. But hopefully over time everything can be sorted, and let's hope for a good future for everybody. But thank you very much. It was Thank a you. great honor to be here. Thank you for joining us all the way from England. Thank you so much. You actually Thank gave you. it a name to this seminar. Thank Moving you. on. Thank you. Moving on, we request Sri Anindya Gangopadhyay, Branch Manager of State Bank of India, Ahmedabad branch, to present his paper. First of all, I would like to thank Principal Sergi and our Vice Principal Sergi, who have invited me to address you people on a very vital subject, that is environment. And I would like to thank again to all of you, so that I may start my address. So I have a very brief account of things to say. हिंदी में बोलूं इंग्लिश में किसी में भी ओके हिंदी इंग्लिश बांग्ला संस्कृत किसी में भी ओके आप सब मिला के ओके लेट्स जस्ट तो हम सुनते हैं कि प्राचीन काल में भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक नगर था, उसका नाम तक्षशिला था। तक्षशिला जो है आजकल वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला में एक यूनिवर्सिटी थी, हमारी जैसी यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी में एक बच्चा पढ़ता था,
तो जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके शिक्षक ने उसे बुलाया और बाकी सभी शिष्यों के साथ में उसकी परीक्षा लेनी चाहिए. तो शिक्षक ने कहा, okay. So there was a city called Takshila in the northwestern part of India, ancient India. Now it is in Pakistan. The name of the city was Takshila. So there were so many people in a monastery. So once they have completed their studies, so the teacher asked them to come in so that he may take their examination, last graduation examination. So he asked them to go out around that monastery and find out some plants which are not useful to human being, which are not used to cure any human disease. So all of them went out and they found out some weeds or some trees or some leaves out there which are not useful for anyone. But one child, one pupil there, whose name was Jiva, he came out barehanded. So the teacher asked him, "Why are you barehanded? Have you not found anything which is not useful for us?" So the Jivak said, "I could not find not a single plant out there which is not useful for human being." So that pupil was sent to one of the great kingdoms of that time, Magadha, which is one of the 16 Mahajanpadas of that time. At that time, Bimbisara was the king of that kingdom. He became the court doctor, the court medicine physician of his court. And later on, when Lord Buddha got hurted by his brother somehow, accidentally by some stone, Jivaka was sent to cure him. So this was the story of Jivaka. I told this story because this story indicates the understanding of our ancient people, how everything is connected to us. Nothing is there in nature which is not useful for human being. And then we have another story from Upanishads. There is a conversation between father and the son. The father asks his son to bring a vatafala. Our sir told a beautiful stories about Vatavriksha. So the fruit of the vata, banyan fruit. So the son brings that. Then the father asks his son to break that fruit. The son breaks it. Then the father again asks him, "What are you seeing there?" He's saying, "I'm seeing nothing because there are very small seeds." So the father says that where you are not seeing anything, the entire banyan tree is there in its minute form. So I would like to take you to 1929 when the great scientist Hubble found out a very beautiful event in universe. He saw that while he was studying the spectrogram from the light they have received from various corners of the universe, he saw that there was a red shift. So he concluded that everything in the universe is getting away from each other. So he concluded that once upon a time, far back in past, everything must be in a form of singularity. So they named it later on Big Bang. At least for our universe, which we know today, this happened some 1380 billion years ago. It was his conclusion. So we have heard that dinosaurs were destroyed by an attack of a meteor some six and a half million years back. Our written history is how old our written history? Only
5 to 6,000 years old. So what we are calling ancient, or we are calling our Vedas ancient or Tripitaka ancient, that is not so ancient. That is as modern as it is we are. ये उतना पुराना नहीं है जितना हमें बताया गया है. कहाँ 1380 करोड़ साल और कहाँ 6 करोड़ साल, 6.5 करोड़ साल, और कहाँ 2-3 हजार 4,000 साल. तो क्या ये उतना ही पुरानी चीज है? ये तो अभी मॉडर्न चीज है ये, बिल्कुल. तो हमें देखना चाहिए कि जो चीजें हमें बताई गई कि बहुत पुरानी है, वो उतनी पुरानी नहीं है. दूसरी चीज ये है कि कॉस्मिक इवोल्यूशन जो है, एक जो विश्व का जो विकास हुआ है जिसमें मनुष्य और सभी जीव जंतु उत्पन्न हुए हैं, ये सब आइसोलेशन में नहीं हुआ है. हमारा विश्व जो है, एक जिसे हम दुनिया को देख रहे हैं, ये एक जो सिंगुलैरिटी के बाद जो बिग बैंग से जो मलबा फैला पूरी दुनिया में, जो सब चीजें फैल के स्टार डस्ट के रूप में, उसी से रिसेंटली क्रिएट हुआ है. मतलब 480 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी. और हम ये भी सुनते हैं कि जो बिग बैंग, जो ब्लैक होल हमारे आकाशगंगा के बीच में है, उसका अभी 20 चक्कर ही लगा पाया है हमारा सूर्य, जो 550 अरब साल पुराना है. ओनली 20 चक्कर, सिर्फ 20 ही चक्कर लगा पाया, इतना बड़ा. उसमें पृथ्वी इतनी छोटी सी है, एक बार सिक्का के एक कण के बराबर भी नहीं है. तो हम देखते हैं कि विश्व में इंसान, मनुष्य जो भी करता है, चाहे वो कुछ सोचता है या कुछ कर्म करता है, उसका प्रकृति पर शायद कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. उसके सारे कर्मों का फल उसी पर पड़ता है, मनुष्य पर ही पड़ता है. तो ये शुरुआत कब हुई? जब विश्व में परिवर्तन आना शुरू हुआ. ये शुरुआत हुई थी एलिजाबेथन पीरियड में, जब बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे डेकार्ट वगैरह थे, जब उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी. और पहली बार टाइको ब्राहे और कोपरनिकस ने पहली बार जब अपने विचार रखना शुरू किया, जो एंशिएंट वर्ल्ड से बिल्कुल अलग थे. पहले मानते थे कि सूर्य जो है वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और सब कुछ ऐसे चल रहा है. लेकिन पहली बार टाइको ब्राहे और कोपरनिकस ने ये बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, और उसका पूरा ये भी कैलकुलेट किया था. तो वहां से हम लोगों का मॉडर्न साइंस जो है वो डेवलपमेंट करना शुरू करता है. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो मनुष्य ने तरह तरह की मशीनें बनानी शुरू की, गाड़ियां बननी शुरू हो गई, भाप के इंजन बनने शुरू हो गए. तो उसके बाद में ये विक्टोरियन एज आते आते बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, जैसे जेम्स वाट ने बहुत बड़ा एक भाप से चलने वाला इंजन बनाया. बहुत सारे लोगों ने पहले जो छापे खाने की जो मशीन थी, उसको भाप के इंजन के साथ जोड़ दिया, तो किताबें छपनी शुरू हो गई. तो ये बहुत सारा काम शुरू हो गया. लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में पहली बार हवाई जहाजों का इस्तेमाल हुआ और हवाई जहाजों से बम गिराए जाने लगे. ये दुनिया में पहली बार था जो इतने बड़े पैमाने पर मनुष्य डिस्ट्रक्शन करने लगा. इसके पहले जब जो भी लड़ाइयां होती थी, जैसे हमारे देश पर तो बहुत सारे अटैक्स हुए थे, शकों के, कुषाणों के और मुगलों के, लेकिन उस तरह से लोग नहीं मरते थे जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में पहली बार विनाश लीला जो है वो विश्व ने देखा. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में और भी ज्यादा भयंकर स्थिति हो गई. जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में बम गिराए गए, और पहली बार इंसान ने देखा कि टेक्नोलॉजी का क्या विनाश, क्या ये हो सकता है. तो उसके बाद में क्या हुआ कि सभी लोगों ने एक यूएन नाम की एक संस्था बनाई. पूरे विश्व के सारे नेताओं ने मिलकर के यूएन नाम की एक संस्था बनाई. उस संस्था में उन्होंने तय किया कि अब हम लोग किसी भी दूसरे देश पर अटैक नहीं करेंगे या उस अटैक का समर्थन नहीं करेंगे. तो उस समय क्या हुआ कि जो भी टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी युद्ध के बारे में, स्पेशली बारूद और गोला बारूद जो विकसित हो गए थे, इसको किस काम में लगाया जाए, उन्होंने सोचा. तो उसका एक इस्तेमाल उन्होंने लगाया कि क्यों ना इसको खेती में हम उर्वरक के रूप में, जो भी हमारे पास जो रासायनिक खाद
जो यूज करते हैं उसके रूप में यूज किया जाए। और उस समय से शुरू हुआ कि खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल होने लगा। न सिर्फ रासायनिक खाद का इस्तेमाल होने लगा, पेस्टिसाइड्स का आंख बंद करके इस्तेमाल हमारे देश में दूसरी जगह पे शुरू हुआ, जो उस समय की मांग भी थी, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही थी और खाने के लिए यहाँ लोगों के पास नहीं थे। हमारे देश में मैक्सिको से लाल रंग का गेहूं मंगाया जाता था और बहुत ही गरीबी में लोग यहाँ रहते थे। तो पहली बार कांग्रेस की इस समय सरकार थी, उन्होंने देश में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के लिए क्या किया जाए इसके बारे में सोचना शुरू किया और देश में रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, जिससे भारत की पारिस्थितिकी का सत्यानाश वहां से शुरू होता है। इसके साथ ही भारत में जब 1991 में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था, जिसको एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी बोलते हैं। वहां से भारत में गाड़ियों का अंधाधुंध, बहुत सारी गाड़ियां चलने लगी देश में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, भारत में इंडस्ट्री बहुत ही बेतहाशा बढ़ोतरी होने लगी और नदियों का, जंगलों का सत्यानाश उस समय से शुरू हो गया। अब हमारे पास अब हमें ये देखना है कि इन सभी अंधाधुंध विकास का हमारे अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। पहले तो देखिए कि जब हम छोटे थे तो हमारे मोबाइल नाम की चीज हमारे जीवन में नहीं थी, तो ऐसा लगता है कि हम एक दूसरी सभ्यता में जी रहे थे। उस समय जब मोबाइल नहीं था, हर काम जो है वो बाय हैंड और लेबर करना होता था। बैंक में भी हम जाते थे तो देखते थे कि बड़े बड़े लेजर्स में हमारे खातों का पूरा डिटेल रखा जाता था। अभी क्या है, अभी एवरीथिंग हैज बीन कंप्यूटराइज्ड। तो कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से हमारे हाथ में डेटा हैंडी हो गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो है हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभावित कर रही है। अभी आप कहीं भी जाइए, बैंक में चले जाइए, आप कहिए कि आपको कार लोन चाहिए, बैंक हैप्पीली आपको कार लोन दे देगा। उस कार को चलाने के लिए सड़कें चाहिए, तो गोल्डन टेट्रायंगल नाम का एक, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने गोल्डन टेट्रायंगल नाम की एक परियोजना शुरू की थी, जिसमें देश के 4 बड़े बड़े शहरों को लंबी चौड़े 6 लेन की सड़कों से जोड़ना था। उसके बाद में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत और राज्य सरकार की सड़क योजनाओं के तहत बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हुआ। इन सड़कों पर चलाने के लिए गाड़ियां चाहिए थी, उसके लिए बैंक से लोन दिलवाया गया। प्रचुर परिमाण में गाड़ियां रास्ते पर उतरी, जिसका हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ही विपरीत असर पड़ा है। अभी आप देख लीजिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी सांस की प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही कॉमन हो गई। हर आदमी के हाथ में इनहेलर है, इंक्लूडिंग मी। कोविड के समय में हमने देखा कि इंसान जो है वो किस तरह से ग्लोबल महामारी के समय में घर में रहने के लिए बाध्य हो गया था। ऐसी भयंकर परिस्थिति हमने जीवन में न कभी सोचा था कि कभी आएगी और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उस समय हम घर में के अंदर बंद हो गए थे। आप कहीं नहीं जा सकते थे, बाजारें बंद थी, सब कुछ बंद था। तो कोविड ने दिखा दिया कि इंसान की जिंदगी जो है इस बदले हुए माहौल में कितनी प्रिकेरियस हो गई है। कोई भी बीमारी इस चलती फिरती दुनिया में कितनी तेजी से फैल सकती है, कितने आराम से। हजारों लोग कोविड में मर गए। इतनी भयंकर अवस्था थी कि शमशान में लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं थी, लकड़ियां नहीं थी, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए बेड्स मौजूद नहीं थे। इतनी विचित्र अवस्था थी और इतनी बड़ी बड़ी सरकारें, इतने डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे वो परिस्थिति बदली और हम लोग आज फिर से पुराने जैसे हमारी जिंदगी थी वैसे हम जी सकते हैं। इस टाइप से कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन कोविड के आने के बाद में हमारी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ गया। हमारी सोच में परिवर्तन आ गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ तो हमें आर्थिक उन्नति भी चाहिए, दूसरी तरफ हमें प्रकृति भी चाहिए। अब इस दोनों का संतुलन हम कैसे करें?
उपनिषद में, ईशोपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भुंजिथा मा गृद्ध कस्य सुधा, मा गृद्ध कहा गया है, लोभ मत करो। तो यहाँ पर जो कहा गया वो आज वैसे ही फलीभूत हो रहा है। और भी चीजें कही गई, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो पूरी सिंगुलैरिटी से पूरा जगत बाहर निकल के आ गया है, ये पूर्ण ही है, वो भी पूर्ण था, ये भी पूर्ण ही है, और वापस इसमें से जब चला जाएगा तो वो पूर्ण ही रहेगा। तो एडिशन कुछ भी नहीं होगा और निकलेगा कुछ नहीं। लेकिन ये तो मेटाफिजिकल बात है। क्या सिंगुलैरिटी और विश्व ब्रह्मांड सब कुछ है और हम कुछ नहीं है? हमारा प्राण, हमारा जीवन कुछ नहीं है? क्या सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो हम क्या हाथ पर हाथ रख कर देखेंगे इस चीज को? क्या सब, जैसे सभी चीजें उत्पन्न हुई तो हम उत्पन्न हो गए और चले जाएंगे, तो क्या हम भी चले जाएंगे? बस यही हमारा विवेक है। ऐसी बात नहीं है। जो चीज है उस चीज को सुंदर बनाना, यही हमारा कर्तव्य है। महाभारत में जब युद्ध करने के लिए कौरव पांडव इकट्ठे हो गए, तो श्री कृष्ण के सामने अर्जुन नाटक करने लगा कि हाँ, इतने लोगों को मारकर क्या मिलेगा, क्या होगा इनको मारकर, मैं राजा बनकर क्या करूंगा, सभी लोग तो मरते ही हैं, आराम से मरने दो, हम क्यों मारे? इस तरह की बातें करने लगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस प्रकृति में हर आदमी का एक नियत कर्तव्य होता है, जो उसका धर्म है। उस धर्म को का पालन करना ही मनुष्य का असली, उसके जीवन का लक्ष्य है। वो जीवन का असली लक्ष्य है अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना, और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद में उसे प्रज्ञा हुई, लेकिन लास्ट में श्री कृष्ण ने कहा जो मन करे सो करो। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, जो मन करे सो करो। सब जानते हो, लेकिन इस टाइप से बात करते हो। तो यहाँ ये बात कही गई। और दूसरी बात है कि इतनी उग्रता है जीवन में, इतनी व्यग्रता है कि हमें भोग लेना है सब कुछ। हम जीवन में आ गए हैं, एक बार हमें जीवन, मनुष्य शरीर मिल गया है, अब मैक्सिमम भोग करके जाना है। अब ये एक विचित्र थियरी है जो हमारे दिमाग में पता नहीं कहां से आ गई कि हम कहीं और जगत से पृथ्वी पर पैदा हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पृथ्वी पर पैदा हो गए हैं तो तरह तरह के भोग की वस्तुएं, तरह तरह के जीव जंतु जिनको मारकर हमें खाना पड़ेगा, और ये सारी जो भी यहाँ पेड़ पौधे हैं, जो भी यहाँ पर खनिज संपदा है, जो पानी है, इन सबको खा लें, जैसा मन करे वैसा नष्ट करें, फिर आराम से चले जाएंगे हम लोग इस जगत में, और फिर वापस नहीं आना है। एक बार ही जन्म मिला है। एक बड़ी अजीब बात है। दुनिया में तो हमने कभी नहीं देखा कहीं स्वर्ग नर्क, जहां से हम आए और कहाँ हमें चले जाना है। चारवाक दर्शन है। चारवाक ने अपने दृष्टि से सही कहा था। जैसे जब कहा गया कि पृथ्वी चपटी है, तो अपने दृष्टिकोण से तो वो सही ही कह रहा है। अगर आपको अपना एक घर बनाना है, इंजीनियर के पास आप गए, तो वो पृथ्वी गोल है बोल के थोड़ा ही आपका नक्शा बनाएगा। वो तो पृथ्वी चपटी है देख कर ही, जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो पृथ्वी का गोलाई विचार करेंगे। अभी यहाँ पर तो पृथ्वी चपटी ही है भैया। तो चारवाक दर्शन में पूरा चारवाक ही है, सभी चारवाक हैं, नाटक करते हैं कि हम वेदांती हैं, सभी चारवाक हैं। जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वही चारवाक है। जिसके पास सभी चारवाक है। चारवाक मीठी मीठी बातें करो और जो गड़बड़ का काम है वो करते जाओ। वही है ना, चारवाक एक प्रसिद्ध एक श्लोक है उसका, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्म भूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। अब जाहिर बात है, पश्चिम में सारे लोग तो यही बोलते हैं, भस्म भूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। सभी लोगों को स्वर्ग में जाना है। जो जाके जीसस को बोल दिया हालेलुया, वो जाएगा स्वर्ग में। हाँ, वो एक अलग विडंबना है। भस्मीभूत भी नहीं होना। कब्र में जब तक कयामत नहीं होगी तब तक वहां रहना है।
Rest in peace. सभी ने स्वर्ग की कल्पना विचित्र की है। हिंदुओं का स्वर्ग ऐसा है जहाँ पर नल नाम का जो एक बहुत बड़ा शेफ है वो खाना बनाकर खिलाएगा। तो हिंदुओं के स्वर्ग में भोजन की कोई कमी नहीं है। मुसलमानों के स्वर्ग में औरतों की कमी नहीं है। अरे घर में एक ही औरत काफी टेंशन करेगी, वहां जाकर क्या करोगे। तो उसके बाद में जो क्रिश्चियन स्वर्ग है वहां पर पंख वाली औरतें घूमती रहती हैं, मेरे को पता नहीं वहां उनसे क्या परियां घूमती रहती है, एंजल्स घूमती रहती है। तो सभी लोगों ने स्वर्ग की कल्पना की है और वो सोचते हैं कि हम मृत्यु के बाद तो कहीं अलग दुनिया में चले जाना है। दूध और बौद्धों का स्वर्ग किस तरह का होता है? बौद्धों का स्वर्ग और नरक अलग अलग नहीं है। जैसा स्वर्ग है चारों तरफ वैसा ही है हमारे यहाँ। उनका पता नहीं है वाली बच्चे। स्वर्ग में भी दुख है, देवलोक में भी दुख है, बिल्कुल नहीं सकते हैं। जब ये लोग पुनर्जन्म मानते नहीं, पुनर्जन्म मानते नहीं, बुद्धिज्म में पुनर्जन्म तो किस फैक्ट्री से आते हैं रोज रोज? वो बात मेरी बहुत बाद में समझ में आई। बहुत गंभीर प्रश्न है। जब आत्मा को मानते ही नहीं है। जब मानते नहीं नहीं, तो पुनर्जन्म मानते हो कि ये सृष्टि जो है प्रथम और अंतिम आदमी है। नहीं, बौद्ध आप नहीं है। केवल एक सृष्टि के पक्षधर है दोनों। नहीं, बौद्ध नहीं मानते। क्रिश्चियनिटी तो बदल रही है, धीरे-धीरे पुनर्जन्मवादी हो रही है, वो तो मानने लगे हैं। अमेरिका बहुत आगे चला गया है, लेकिन ये लोग एकदम जिद में अड़े हैं कि ना, सब एक ही बार पैदा हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि आते कहाँ से हैं? कोई आपकी फैक्ट्री है, कोई जगह है। जाने वालों को तो हम जानते हैं, सब अपने कब्र में विश्राम कर रहे हैं। जब कयामत के दिन आएगा और खुदा जब सबका जो है निर्णय करेंगे तब देखा जाएगा। उतने दिन तक बेचारे क्या करेंगे बैठ के। हमारे यहाँ तो 13 दिन में एकदम साफ होता है, एकदम। और देह तो जो है तुरंत वो कोई भी 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, सोचने के लिए। लेकिन जिद्दी आदमी सोचता नहीं है। लेकिन सर वो हमारी समस्या है, वो बौद्धों की जिद्दी समस्या आदमी नहीं का है। जिद जो है वही नहीं, उसका सबसे हम बड़ा सोचते हैं कि जब कुछ आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म कौन लेगा, कैसे होगा, ये हम सोचते हैं। अगर आप माने ही नहीं आत्मा नहीं है तो कोई समस्या नहीं। बौद्धों के यहाँ पुनर्जन्म है, लेकिन किसका पुनर्जन्म है? मानने न मानने से थोड़ा कुछ होता है। तो सर से पूछ लीजिए। आप बिना जाने जहर खा लें, जहर छोड़ लेगा आपको। नहीं, उसमें जो जन्म लेने का पुनर्जन्म का सत्य जो है वो है, तो सत्य है। तो वो ये बताएंगी को प्रतिसंदेह करके एक कोई प्रश्न है कि जो एक भिक्षु से पूछा नाग से। तो उसने कहा कि नाम रूप प्रतिसंदेह, नाम रूप की प्रतिसंधि होती है, आत्मा वो नाम नहीं देते, शब्द से प्रॉब्लम, शब्द से प्रॉब्लम। आप परी कहिए वो हूर कहिए, वही एक ही बात, टर्म बात एक ही है। आप पंख वाला मानिए, वो बिना पंख वाला है। आत्मा की जगह कौन लेते हैं? कॉन्शसनेस लेते हैं, विज्ञान लेते हैं। लेकिन वो नाम क्रिश्चियनिटी में भी पहले क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। ये चौथी से छठी शताब्दी के बीच, चर्च और किंग के बीच में गुप्त समझौते हुए हैं। उसके बाद जब न्यू टेस्टामेंट आया है तो उसमें ये गायब हुआ है। और ये इसके बाद जब क्रिश्चियनिटी इस्लाम आया है तो उसी को फॉलो करते चले गए, इसलिए वहां पर नहीं है। लेकिन एंशिएंट जो वो है क्रिश्चियनिटी है उसमें था, चौथी शताब्दी से पहले के रेफरेंसेस हैं और उसको इन लोगों ने बड़ी सफाई से गायब किया। और ये झगड़ा है इन दोनों में। ले देखिए यही लेवल ना लग जाए कि कोई पार्टी का मीटिंग हो रहा है। ले दे करके यही है कि हमें इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं और चले जाना है। ये सभी लोगों ने माना है, इतना ज्यादा मान लिया है कि अभी बदलना मुश्किल है। लेकिन एक्चुअली अगर जीवन को विचार करके देखें तो ना कहीं जा रहे हैं ना कहीं आ रहे हैं। जो हमारी जो संतति जो यहाँ पृथ्वी पर रह रही है, हमारे नष्ट हो जाने के बाद भी हमारे जेनेटिक्स जिनमें ट्रांसफर हो रहे हैं बिना आत्मा के ही,
वो जैसे वो वटवृक्ष के भीतर वृक्ष विद्यमान रहता है, वैसे ही हमारे जेनेटिक्स के बीच में हम विद्यमान रहते हैं। तो बिना आत्मा के भी हमारे जेनेटिक्स के थ्रू नेक्स्ट प्रजन्म में हमारा जन्म हो रहा है, यद्यपि हम इस चीज को नहीं जानते हैं, जानना नहीं चाहते हैं एक्चुअली। तो हम मानते हैं हम रहेंगे ईगो के रूप में, हम पूरा सशरीर स्वर्ग जाएंगे तो शंकु उस टाइप। तो कहने का मतलब यही है। तो जाहिर बात है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों का, तो मैंने अभी ये बताया कि प्रकृति जो है वो हमें बदल रही है और हम लोग प्रकृति को बदल रहे हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर में एक चीज है, एक और बात थी। डेस्मंड मॉरिस की एक किताब पढ़ी थी, पीपल वॉचिंग में उन्होंने बताया कि किस प्रकार इंसान का शरीर जो है वो इवॉल्व होता है। इंसान की आंखें, इंसान का शरीर पुराने जो होमो इरेक्टस था उससे किस प्रकार से होमो सेपियंस बन गया, कैसे इवॉल्व हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर है बहुत एडेप्टेबल है, और तो मनुष्य शरीर में कोई खूबसूरती नहीं है। ना ये चल सकता है ठीक से, ना तैर सकता है, ना ही पेड़ पर चढ़ सकता है, ना उड़ सकता है। कोई भी सुंदरता विश्व में मनुष्य के शरीर में नहीं होती है। लेकिन ना आपके शरीर पर बाल है, ना आपको गर्मी बर्दाश्त होती है, नहीं ठंड बर्दाश्त होती है। सिर्फ एक बुद्धि मात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य के अंदर में सभी जीवों से अलग है। बाकी सारी चीजें जो है वो दूसरे जीवों से कमतर है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ना आंखें चील के समान देख सकती हैं, ना नाक कुत्ते के समान सूंघ सकती है, ना आप चीते के समान दौड़ सकते हैं, ना आप पक्षियों के समान उड़ सकते हैं। किसी भी मतलब बिहार में बोले किसी गत का नहीं है। तो इस टाइप से है। लेकिन एक चीज जो दिमाग जो है, और दूसरी चीज है एडेप्टेबिलिटी, जो बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। जैसे हम जब गर्म जगह पर चले जाते हैं तो कपड़े उतार देते हैं, फिर अगर ठंडी जगह पर गए जहाँ बर्फ पड़ रही है तो दूसरे की खाल ही ओढ़ लेते हैं और दूसरे जानवर की खाल ओढ़ लेते हैं। तो हम बहुत ही एडेप्टेबल जीव हैं। बदली हुई परिस्थिति में इतने ज्यादा पॉल्यूशन को भी झेलने लायक हमारा लंग्स हो जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा उसको। अब इंसान को इतनी जल्दी है कि एडेप्टेबिलिटी के लिए टाइम नहीं दे रहा है, वो उसको बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दे रहा है। तो अगर एडेप्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आत्मघाती हो गया। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान जो है आत्मघाती हो गया। अब सब विनाश, अपना ही विनाश करना है। ये जस्ट एक राक्षस था, उसका नाम भस्मासुर था। तो भस्मासुर ने भगवान शिव से एक वरदान ले लिया कि जिसके भी सिर पर हाथ रखो वो तुरंत भस्म हो जाए। तो उस वरदान को चेक करने के लिए भगवान शिव पर ही हाथ रखना चाहता था कि कैसे मैं इसको चेक करूं। तो भगवान शिव भागे वहां से। अंत में उनका मोहिनी नृत्य देख करके उसने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। ये जो मोह है, ये जो जानते हैं सब कुछ लेकिन मानते कुछ नहीं है, अपने जीवन में उतारते नहीं है। सारी बातें हमारे शास्त्र में या फिर सभी जगह कही गई हैं। मैडम ने बताया कि लॉ भी सारी चीजों का है, एनवायरमेंटल लॉज हैं। सर ने बताया पंचवटी में हर चीज की औषधि मौजूद है, हर बीमारी औषधि से ठीक हो सकती है। लेकिन हम अपने भीतर में वो परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। जो बैलेंस चाहिए, जो मध्यम पंथ जिसको भगवान बुद्ध ने बताया और शास्त्र में भी बताया गया, उस पर नहीं चलना है। ये जो मतलब ये जो हमारी जो ये दृढ़ता है अपने, ये जो हमारी जो ये मतलब मोहग्रस्तता है या जो भी कह लीजिए, जिसकी वजह से हम अपने अंदर आंतरिक और बाह्य परिवर्तन नहीं करना चाहते, इसकी वजह से सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। विनम्रता भी नहीं है, बहुत एग्रेसिव। अब बैंक में चले जाइए, लोन देने के लिए बैंक इतना एग्रेसिव है, देखकर अजब बड़ा अजीब लगता है एकदम है। इतना एग्रेसिव रहता है बैंक लोन देने के लिए। लोग भी, जिसने एक बार ये तय कर लिया मुझे गाड़ी लेनी है, वो लेकर ही रहेगा।
और देने के बाद इतना तकलीफ भी होता है। मतलब वही इतना जो एग्रेसिवनेस है, उग्रता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। यहाँ पर सुख को धन से और धर्म से जोड़ा गया है। ये दोनों जब बैलेंस में रहेंगे तभी तो जीवन में सुख आएगा। तो हर चीज में बैलेंस की जरूरत है। और ये जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न लाइफ में जो हम जो इतना मैक्सिमम आग्रह हमारा रहता है कि मैक्सिमम चीजों को संग्रह कर लें, वो सब रोकना पड़ेगा। थोड़ा सा हमारे अंदर को बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने। Thank you, Anindya sir. It was really a very informative one, and you added a very new perspective to this session, which we all wanted. Now, I would request the chairperson of this session, Professor Aishwarya Vishwas, to share her viewpoint. Chairman first. আমার তো মনে হচ্ছে যে সেশনটা চলতে চলতে অনেক ডিসকাশন বা তারপর অনেক অবজারভেশন হয়েছে, সুতরাং আর কিছু দেওয়ার কি দরকার আছে স্যার? First of all, the paper presented by Professor Srimati Anamika Pandey Bistro, Solicitor, Manchester, England. Our paper is really very resourceful paper, and it is full of references and instances. But I think it is little technical for us. We are not so accustomed with such types of laws and types of acts, and therefore so many of us could not digest all the things. Sir has given good observation on it. And the second paper, Because I was a law student. Sri Anindya Gangopadhyay, this paper is very fascinating. He has started from the Bengali, started from English and switch over to Hindi, and he has given in between his paper there are lots of numerous points between his observation as form of observation. And this is a very good paper, and thank you very much. Please keep up it. It's really a wonderful seminar, and in the last session, I must submit that Professor Avdesh Chobe contributing is really wonderful paper. चौबे जी, हम लोग इसको छपाएंगे लेकिन जेरोस करिए तब ना, जेरोस कर लीजिए, रख ले, चौबे जी को ही रख ले। Thank you, Aishwarya ma'am. So with this, we would like to end the first day of two-day international seminar. Thank you everybody for joining us. Thank you our Dr. Sudhakar Mishra sir for coordinating such a wonderful seminar. Thank you our respected principal sir, Dr. Shomesh Kumar Mishra. He is the reason why we all have this kind of meaningful seminars. No, it's true. Because of his vision, we are having scientific point of view also. As you said that what madam said is very technical for you, what you all say becomes very Indological for us. So this technology and combination of classical part is very much important for us, and because of his vision only we can have this. Thank you so much, sir. And thank you all the chairperson. I would request everyone to join me in thanking the chairperson with a round of applause.